हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो यहाँ पे प्रॉफर्म्स का काफ़ी हल्ला हो रखा है और सब लोग प्रॉफर्म की बात करते हैं। तो हमने सोचा किसी एक्सपर्ट को लाते हैं जो प्रॉफर्म से रिलेट करता हो या फिर प्रॉफर्म्स को जानता हो। तो हमारे साथ हैं फ्रैंक, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं और इनको अच्छी नॉलेज है प्रॉफर्म्स की। तो थैंक यू बडी फॉर ज्वाइनिंग अस। Why प्रॉफर्म्स आर important and how it works. Thank you very much for inviting me. I Okay. hope I can bring something valuable. ओके तो देसी नहीं, अब अंग्रेजी में समझते हैं कि क्या चीज़ें प्रॉप फर्म में मिल जाती हैं और क्या यूनिक है इनकी प्रॉप फर्म में। सो ब्रदर, व्हाई प्रॉप फर्म्स आर इम्पोर्टेंट? I believe prop firms are giving opportunities. Nowadays, you can see that there are so many people with good skills, with good education. They know how to trade. They have good strategy. But the only thing they are lacking are fund. Prop firms are stepping in to solve this issue, right? We have the funded account, so users are coming to us, spending some little money, getting huger accounts with leverage of X thousand of the initial amount, and then they are risking our assets and not theirs. In the end of the day, the profit is coming from the total amount, right, which is given by us. Okay. That means they are not risking their assets and they are multiplying their profit X thousand. मतलब अगर आपके पास पैसे कम हैं और आप बड़े अमाउंट में ट्रेड करना चाहते हो या फिर आप ट्रेडिंग में एंट्री लेना चाहते हो तो आप प्रॉप फर्म चुन सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जो कि है फंड। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, और आपके पास छोटे पैसे हैं, कम कैपिटल है, तो आप उसे लॉस ही करने वाले हो। तो आप प्रॉप फर्म्स का यूज़ कर सकते हो, अच्छा कैपिटल मिल जाता है यहाँ पे और आप दूसरे के पैसों पे रिस्क लेके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। सो फ्रैंक, व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन योर फर्म एंड अदर्स? Prop firms are coming from Forex originally, and there are thousands. Obviously, there are some issues with prop firms too. Why? Because prop firms want to manage their risks too, right? So they're putting a lot of rules, a lot of restrictions, and they're not allowing some kind of trading strategy. It isn't for it. Nowadays, everything is moving to crypto. So this is a very new product even for crypto, and the difference between the traditional one and the new one is that in our firm we're offering daily payout. We do not require any KYC. We have our Hindi support. We do allow all trading strategy, even hedging, scalping, day trading. We don't have any consistency. So I believe this puts us apart from other prop and makes our product. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग मिलती हैं प्रॉप फर्म से। सबसे मेन पॉइंट है कि इनकी कोई कंडीशंस नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन या फिर कुछ भी नहीं है। आप आओ, ट्रेड करो, अपनी कोई भी स्ट्रेटेजी लेके आओ, किसी भी चीज़ में ट्रेड करो, या फिर जो भी लिमिटेशंस हैं दूसरे प्रॉप फर्म्स की वो यहाँ पे नहीं मिलती है और आप यहाँ पे इजिली मनी बना सकते हो। What about challenges? Yeah, the challenges. Basically, this I would say about my product, right? We have the challenges. So we want to onboard good traders, but we don't want only lucky people. We want people with good skills, so we can empower them. We can give them the funds so they can trade, earn money, and we have the split, right? 80% goes to trader, 20 comes to us in the end of the day. So we have the challenges in order to prove their skills. They have to go through the challenges, prove the skills, and then go to funded stage where they can trade real money and then withdraw daily. तो आप गैम्बलिंग ना करो और अपना लक ना आजमाओ, इसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा चैलेंज वाला पार्ट भी है। जैसे फ्रैंक ने बताया कि स्किल अगर आपके पास है, वाकई जेन्युइनली आपने ट्रेडिंग सीखी है और आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो इसमें एक छोटा सा पार्ट है चैलेंज का, जिसे आपको पास करना होता है और उसके बाद से आप जो भी पैसे बनाते हो उसका 80% आपको मिलता है और 20% इनका चार्जेस में सकता है। अभी तक प्रॉप फर्म का नाम सिर्फ फॉरेक्स में सुनने के लिए आता था, बट अभी क्रिप्टो में भी आ रहा है। तो फ्रैंक अभी क्रिप्टो में ही काम कर रहे हैं, सुन आप लोग फॉरेक्स में भी आ रहे हो, तो डिफरेंस क्या है दोनों? व्हाट्स द डिफरेंस? So the difference, I would say, starting from the UI, the interface of the platform in prop firms, in crypto itself, not only about the prop firms but in exchanges, you can see that the trading platform looks totally different. It is very user friendly. It's very user friendly for people who are in crypto, but it might be a bit challenging for people who are coming from forex. The same thing goes when I'm a crypto trader, but whenever I go to MT4, MT5, I feel that user interface is not meant to be very straightforward. Something I feel it a bit, but it's because I've got used to crypto. So there is a huge difference in interface in UI. We made our platform, if you talk about our product, we made our platform crypto friendly, as we got more than 120 coin pairs to trade. And if you're a crypto trader, it will be very easy for you to understand. And even if you're coming from forex, I believe our educational things, what we have, educational videos, educational posts, will be helping you and guiding you throughout the platform and explaining you all the features. ओके, और प्लेटफॉर्म्स के साथ एक और इशू आता है कि उनकी जो सपोर्ट टीम होती है, मैंने कई सारे अदर प्लेटफॉर्म देखे हैं जहाँ पे सपोर्ट लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो व्हाट अबाउट सपोर्ट सिस्टम? Yeah, definitely. I would say that our customer support is 24/7, and especially for Indian market, we have a dedicated Hindi support. They can either get a call, get tickets through social media, receive emails, and respond in a very short time. और साथ ही लेवरेज की बात आ जाती है इन्हीं सब के साथ कि कई सारे प्लेटफॉर्म अलग अलग लेवरेज देते हैं, अलग अलग एक्स की मार्जिन देते हैं। तो व्हाट्स योर प्लेटफॉर्म इज ऑफरिंग इन लेवरेज? Yeah, in terms of leverage, we are offering X5 of the initial amount. Yeah, I know that it's not very high, it's not very low, but it helps
our traders to manage, because in exchange you can go x20, x30, but it can be liquidated. Here we have the rule of daily drawdown and the max. So in order to manage it, you have the max leverage. इट मीन्स कि लिक्विडेशन से नॉर्मल ट्रेडर को बचाने के लिए चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो सेंस भी बनाती है। और ये काफ़ी अच्छा है कि इन्होंने 200x 500x का लेवरेज नहीं दिया है, सिर्फ इसलिए कि आप लिक्विडेट होने से बच जाओ। बिकॉज एक ओवर ट्रेडिंग होती है और एक ग्रिड होती है जिसमें आप फंस जाते हो और बहुत हाई अमाउंट में ट्रेड करने लगते हो, वहाँ आप लिक्विडेशन के पास पहुँच जाते हो। और एक दिक्कत आती है हमारे प्रॉप फर्म्स के साथ कि वहाँ पे विड्रॉल्स नहीं मिल पाते टाइम पे, कई बार हफ्तों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, और कुछ में तो विड्रॉल्स मिलता ही नहीं। व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर विड्रॉल्स एंड हाउ यू आर फिगरिंग इट आउट? So basically right now, the withdrawals are being made in USDT and we are sending over the funds to the wallets of our users. The withdrawal process is quite simple. As I told you, our unique selling point is that we do offer daily withdrawal. So the minimum time of receiving the withdrawal is 4 hours and the maximum 24 hours. अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इनकी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हो और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, बिकॉज इनके पास हिंदी सपोर्ट सिस्टम भी अवेलेबल है। सो थैंक यू ब्रो फॉर ज्वाइनिंग अस एंड एक्सप्लेनिंग। Thank you very much for having this time with me. ओके और अगर आपको फंडेड अकाउंट चाहिए तो आप कमेंट कर दो, हम ट्राई करेंगे कुछ स्पेशल लोगों को कुछ स्पेशल अकाउंट गिव वे करने का, स्पेशली फ्रॉम फ्रैंक। Yes, for this interview, I appreciate his time spending with me. Hope everything was very informative and valuable. To share more experience with your user, with your audience, I would go with my own product and I will offer 5 accounts of $2,000 each as a giveaway. In order to participate, you have to comment Cointracts under this video. And yeah, let's print money all together. ओके So